Welcome to each and every one of you to Steven Sir Makes It Easy, where I, as usual, hope to do the explanation in such a manner where the concepts for which you have come to this particular channel can be clarified in a easier format. Okay, so before I get started with the task for the day, which is the explanation of a practical problem based on a not-for-profit concern, a very quick reminder concerning our social media handles. There's a Facebook ID, there is an Instagram handle, and there is a Twitter ID also. Yes, I will do my best to be a lot more active on those social media platforms, but it will be highly encouraging to us. It would motivate us if you can be a part of those social media handles. The most important one is the Telegram channel, which has been given above, so that please make sure, for sure, you get connected and you join that particular Telegram channel for multiple reasons. One, we use the Telegram channel to notify our members concerning the upload of various lectures, and two, the PDF of whenever the chapter comes to an end of different standards is shared in the question and answers is shared in a PDF format. If you do intend to purchase the book for which or from which we do the question and answers, the link for the purchase is provided in the description below. If you have missed out our previous lecture, because there is always a connection between the last one and this one, you will notice that during the lectures I always tend to say क्या आपको याद है पिछले lecture में मैंने क्या किया था, because there is something linked to the previous lecture. There is a card being provided above, you can always click it and go to that particular lecture. Right now, let's get started. So, we have been doing for multiple lectures accounting for not-for-profit concern organization, and we have reached, not at this level, a little bit higher. There are multiple aspects that I have covered up, and today's question will introduce maybe one or two new concepts and repeat multiple old concepts. So, here goes. Following above is the receipt and payment account of Indian Sports Club. Prepare, okay, so grammatically that's not very correct, but prepare income and expenditure account and a balance sheet as on December 31st, 2017. Very important. What is the current year, my dear? Look above. This is a December question, so it's Jan-December. Therefore, the current year is 2017 because it said prepare income and expenditure account and a balance sheet for December 2017. So, the next year will be 2018 and the last year, the past tense, was 2016. Every problem, every time. एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, क्या कि आपका जो सोल्यूशन है वो कौन सी साल के लिए है और उसकी वजह से अगला साल क्या है और पिछला साल कौन सा था. Now, today also, when you read the question, which is this one, please make sure you have a certain system in your mind. What is that? What will be your first step? I will prepare the opening balance sheet. Second step, from that opening, I will transfer to the closing balance sheet. Third step, I will prepare income and expenditure account. Fourth step, I will solve all the adjustments. So, let's get started. This is in the books of Indian Sports Club. Okay, receipts and payment account is given, fine. Balance brought down, ये क्या है? Receipt and payment का मतलब है cash, तो ये cash balance है, but ये opening है, तो ये जाएगा opening balance sheet में. Subscription income है, life membership fees income नहीं होता क्योंकि people have only one life, तो they pay life membership fees only once. So life membership fees is a capital item and therefore it must be capitalized. What does that mean? Add it to capital fund. Entrance fees, everybody pays. Every month somebody or the other is coming. It's an income. Tournament fund, very important. When you have a fund, वो fund का मतलब क्या है? Collection of money. For what? For tournament. Okay, so tournament fund में कितना है? 26,000. What is going to happen? There will be a tournament. There will be expenses. Then for those expenses of the tournament, cricket tournament, football tournament, badminton tournament, you don't go and ask, तू पैसा देना, तू पैसा देना. नहीं, no begging business. Tournament के खर्चे ये tournament fund से minus होगा.
इसके लिए ये टूर्नामेंट फंड या दूसरे टाइम पे कोई भी टाइप का फंड हमेशा लाइबिलिटी में लिखना है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंड है। टूर्नामेंट का एक्सपेंस इधर से ही डिडक्ट होगा, ये जनरल आइटम नहीं है, ये स्पेसिफिक आइटम है। इसके लिए यू मस्ट राइट दिस ऑन द लाइबिलिटी साइड, ताकि ये अलग रहे एंड उसमें से टूर्नामेंट के खर्चे बाद में माइनस हो जाए। लॉकर रेंट, इट्स अ क्लब, there will be multiple lockers that is given on rent to the members, so every month you get this income, so this is an income. Sale of old sports equipment, I will remind you, do you remember what I did in the last previous 2 lectures? Do you remember? I hope so. You remember. Why? Because I have in the last 2 lectures definitely covered up sale of an asset. That's a sale of an asset, very important, sports equipment. And I've also told you, when you sell an asset, there is a possibility of a profit or a loss. If the selling price is more and the cost price is less, hey man, you're lucky, profit. But if the selling price is less and the cost price is more, book value is more, then I'm very sorry, but this time there is a loss. My last 2 lectures had losses, but today if you notice, the costing is 2,200 but the selling price is 2,500. Hey, congratulations. Why? Profit. So we will in today's sum write profit on sale of sports equipment. Sale of old newspaper. Now here don't think, sir, here also cost price, selling price, profit, loss. No. Newspaper is not an asset. It is raddi, scrap, raddi. So it's an income, normal income. Legacy, hold on, what's legacy? When people, big shots, अमीर मर के चले जाते हैं और वो अपने वसीयत में लिखते हैं, will they write, please give this my money, this much of my money, this much of my property to this organization, that organization, this organization is doing a good job, that organization is doing a very good job, please give it. That is called as a legacy, because they want their name to continue after their death normally. Okay, so legacy is never every day, because a person dies only once. Okay, तो उसकी तरफ से जो legacy आता है, okay, that also only comes once. Just like above, life membership fees. तो life membership fees को आपने क्या किया? How did you handle it? I added to capital fund. Similarly, legacy, you have to add to capital fund. Okay, now it's a different thing. अगर वो legacy के बाजू में लिखे general, then it's a normal legacy. It's treated like a different and a normal legacy. Then that is written as an income. But if it is only legacy, it is a special legacy, and therefore it must be capitalized, added to capital fund. Next, salary, खर्चा है. Electric charges, खर्चा है. Billiard table, खर्चा नहीं है. For every billiard game, you don't require a new billiard table. On that same billiard table, you can play multiple years and multiple games. It is an asset. Office expenses, खर्चा. Printing and stationery, खर्चा. Tournament expenses, खर्चा. किंतु परंतु, but this tournament expenses specifically will be deducted from the fund, because you already have a collection kept for it. So when those expenses happen, it will happen from that particular fund. Repair of ground, it happens maybe every day, na? Something or other goes wrong on the ground, it has to be repaired, it's an expense. Furniture purchased, furniture में हम add कर लेंगे because it's a new furniture. Sports equipment क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं दिया, it's purchase. सर बोला नहीं, actually payment है ना, payment मतलब you paid और आपने खरीदा sports equipment, तो it is purchase. So please note, there is sale बगल में, और जो मेरे ऊपर है there is a purchase of sports equipment. So there are 2 adjustments. Cash in hand, asset. Cash at bank, asset. Fixed deposit, hey, that's also an asset. कब किया? 1/10/2017, that is 1st October, November, December. रुको, 3 महीने के लिए आपने ये फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखा होगा, तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट बनता है 3 महीने का. किधर है इंटरेस्ट? हमको तो इंटरेस्ट मिला ही नहीं रिसिप्ट में. हाँ, तो तुमको ना हिडन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. I repeat, again I'm saying, again and again I'll say, do you remember what I did in the last lecture? There was interest on FD, but it was tackled in a different manner. Okay, today
it is being tackled in a different manner. Okay, so other information. Subscription outstanding. What does outstanding mean here? Receivable, because subscription is an income. But look at the date, December 31, 2016, that is the last year. So this point is saying that this 1200 was to be paid by some members to us, receivable to us last year. So it always happens, if you have members, not every member is going to be perfect. कोई टाइम पे देगा, कोई टाइम के बाद देगा, कोई टाइम के पहले देगा. You meet all kind of people. So this point says that 1200 of last year you were to receive. So I will write that in the last year's balance sheet, meaning opening balance sheet. And 3200 on December 31, 2017. Hold on. Okay, let me go there. So 1200 was receivable at the end of last year, and 3200 is receivable at the end of this year. So for subscription, it's a good idea if you leave 2 lines, so you can handle both of this. Locker rent. What about locker rent? Well, outstanding. Locker rent is an income. Outstanding means receivable. Receivable. On December 31, 2017, current year 250. जैसे सब्सक्रिप्शन आपको मिलना है करंट ईयर का 3200, सिमिलरली लॉकर रेंट आपको करंट ईयर का, नॉट लास्ट ईयर का. तो लॉकर रेंट के नीचे एक लाइन खाली रखना. सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्लीज नोट, आउटस्टैंडिंग सबवा कहा, वेरी इंपॉर्टेंट. आउटस्टैंडिंग का अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग. When they say outstanding with an income, it means receivable. So subscription के साथ कहा receivable, locker rent के साथ कहा receivable, salary के साथ कहा payable. 2 different meanings. If you are with bad circle of friends, you will be influenced with bad habits. If you are with a good circle of friends, you will be influenced with good manners and good habits. So I repeat, depend करता है who circles you. You inherit the qualities of the people that you are moving around with. Okay, so salary outstanding मतलब payable, and if you see the date is okay, December 31st, 2017, meaning current year. On Jan 1, 2017, hold on. This is quite a bit of an issue for me. Jan 1, 2017, first day, the club had building 36,000. So on the first day, the club already had building asset, furniture, and just behind me there is sports equipment. Just behind me, sports equipment. So 3 assets: building, furniture, equipment, which I will write in the opening balance sheet. Depreciation charged on these items at 10%, including purchase. So depreciation is not done at the very beginning, at the end of the year. So that is in the closing balance sheet. We will be doing the depreciation. Right now, after ये पूरा सर्जरी हमने कर लिया, okay, we try to understand क्या किधर है. Step 1 होता है opening balance sheet. What do you write in opening balance sheet? Everything that you thought should go to opening balance sheet. First वो तो कैश आएगा, कैश एट बैंक तो है नहीं. हाँ, उसके बाद में लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा 1200, एंड बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, और ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा. तो भाई काफ़ी चीज़ें आने वाली है. तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं. If you have a format drawn, that is simply stupendously amazing, okay, because you can always join me in solving the problem. So there is a opening balance sheet and there is a closing balance sheet. The length of the closing balance sheet is lamba because there are too many items today. Okay, you will notice that the font also is a little haywire because I had to reduce the font just to fit all of these items. So this is the situation with the balance sheet, and the income and expenditure account is normal. You always mention last year, current year, and the
next year. It's a good thing. It's a good thing. Now, how do I start with my opening balance sheet? कैश पहले लिख लो. ओके, चलते हैं जी, कैश लिख लेते हैं यहाँ पे 7890. उसके बाद पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 1200 जो रिसीवेबल है. सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला तो हमेशा रिसीवेबल होता है. आप लोग क्या करोगे, यू विल रिमाइंड दैट स्टूडेंट, वो मेंबर को आप याद दिलाओगे कि सर मैडम आप गेम खेलने आ रहे हो बट आपका पुराना सब्सक्रिप्शन बाकी है तो प्लीज़ वो दे दो आप. हाँ, नेक्स्ट बिल्डिंग 36,000. नेक्स्ट फर्नीचर 12,000. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देर इज अ लॉट ऑफ आनाकानी. बाय दैट व्हाट डू आई मीन, सेल है, परचेस है, डेप्रीसिएशन है, पूरा महाभारत है. 17,500. फिर क्या करो, फिर आप चाहो तो पॉज कर लो, यू कैन ऑलवेज पॉज, देन यू एड अप एंड यू फाइंड आउट द कैपिटल फंड. ओके, आई विल गो अहेड 74,590 and the capital fund is the same. So that's my step 1, that is our step 1. okay, फिर क्या करना है, step 2, ये जो ओपनिंग है उसको क्लोजिंग में ट्रांसफर करो. I will always keep on reminding you should, if you will share the lecture, this lecture with your friends, it would be amazing. Just like it is being useful to you, it will help them also. So if you can please share the link of the channel or the video, that is amazing. Okay, so cash closing, ये तो opening था ना, ये वाला opening 7,890 तो ऊपर है closing. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1200 क्या होगा, कुछ नहीं, वो लिख के रख दो, यू विल रिसीव इट इन सम टाइम. ओके, तो वो रिसीवेबल पुराना हिसाब है वो क्लियर हो जाएगा. बिल्डिंग आएगा, लीव लाइंस फॉर दैट. देन फर्नीचर के लिए आई थिंक लीव अराउंड 3 लाइंस. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए लीव अराउंड 5 लाइंस. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5 लाइंस. ओके, सो स्टेप 2 था कि ये जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग में ट्रांसफर किया. नाउ विल लुक एट द क्वेश्चन बिकॉज फ्रॉम देयर वी विल सॉल्व द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो गाइज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट. सब्सक्रिप्शन 52,000. तो इनकम साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 52,000. देन दैट्स इट. Then there are adjustments connected, but then वो later on question में दिए हैं. So when I read that, तब मैं solve करूँगा. Next, life membership fees. Life membership fees is considered to be a capital item and it is capitalized, meaning it is added to capital fund. So एकदम ऊपर आपको दिखेगा 2,200. Next, entrance fees, that is people keep on entering, by that I mean people keep on joining. okay, कोई भी जिम रहेगा तो जनवरी फरवरी के मंथ में तो सब लोग नया रेजोल्यूशन बनाते, I want to be fit, I want to be fit, I want to stay healthy. Everybody starts to join the gym, so everybody keeps on paying entrance fees. 3,200. 3,200. Next, a tournament fund. This is money kept aside बाजू में for the tournament. So you do that by writing in the liability side so that it doesn't mix with other money. 26,000. Always a fund is kept written on the liability side. Locker rent. Normal income होता है तो इनकम साइड पे लिखना है बिकॉज एवरी मंथ मेंबर्स लॉकर रेंट पे करते हैं एवरी मंथ. सम पीपल डोंट पे तो वो रिसीवेबल हो जाता है. सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना. सेल you have to minus from sports equipment, but you have to minus the cost price, which is called as the book value, which is 2,200. So from sports
equipment which is above me minus करो but the cost price, book value. So your remaining sports equipment is 15,300. I hope you can see that the font is a little small, but नसीब है आपका, आशीष है ऊपर वाले का आप पे कि आपने बेचा 2500 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ. लाइक आई सेड, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हुआ. And that is exactly what I wrote about. Profit on sale of sports equipment 300. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम. नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. इनकम साइड पे लिखते हैं 750. नेक्स्ट, आई थिंक वी हैव लेगेसी. मरने के पश्चात जो वसीयत के हिसाब से डोनेशन आता है, ओके, पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं, तो ये मरने का काम तो एक ही बार होता है, तो ये जो है ये एक ही बार लाइफ में कोई दे के जाता है, तो इट इज एडिड टू कैपिटल फंड एक बार. 37,500. 37,500. सैलरी, leave one line because on the expenditure side, क्योंकि एक adjustment है. 11,000. Electric charges 5,500. आउटर कॉलम में लिख लो, आउटर कॉलम. Billiard table. Billiard table you buy only once. A sports club, it's a costly thing. Okay, तो asset side पे it's a costly thing. Again and again you don't buy. 17,500. Office expenses, उसके नाम में ही लिखा है expense. 4,100. Printing and stationery. It can be complicated, but आज के लिए it's very simple. 2,300. Okay. So next, tournament expenses. Do not write here tournament expenses, क्योंकि tournament के खर्चे के लिए the pocket is different. There is a tournament fund, from that you minus tournament expenses and you will still have money in that fund. 7,500. So that is right above. Next, repair of ground. हर दिन का खर्चा है. अगर गाड़ी है तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अगर ग्राउंड है तो भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा. 2,000. नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज. आपने नया फर्नीचर खरीदा. 7,700. फर्नीचर में ऐड कर लो, फिर टोटल लिख लो नीचे. 12,000 के नीचे आप टोटल लिख लो. 19,700. ओके, तो जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, सिमिलर मैनर यू ऑल्सो हैव परचेस्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ओके, सो आई कैन add it to furniture or building. It has to be added to sports equipment. Here goes, just above me. 12,000. The total comes to 27,300. Okay, obviously it's visible, but sometimes the audio also is helpful. Next, cash in hand. Okay, 12,690. I have written it right above. 12,690 क्योंकि ये लास्ट डे का है. देन कैश एट बैंक 10,000. आई हैव नॉट रिटन इट क्योंकि ये ओपनिंग में था नहीं. सो आई राइट इट अफ्रेश. बिलियर्ड टेबल के नीचे एसेट में लिख लो 10,000.
Now this question does have a hidden adjustment on what? Fixed deposit. ये बैंक में आप पैसे डालते हो कितना? 30,000. बट ये आपने डाला 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए. ओके, तो पहले काम करो, एसेट में लिख तो लो. ओके, लिख लिया फिक्स डिपॉजिट 3 months. देन इंटरेस्ट कितना है? एक मिनट, उसके लिए मैं पहले आपको वर्किंग दिखा देता हूँ. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट, ART, what is that? Amount, rate, time. Amount is how much? 30,000. Rate is how much? 10%. Time is how much? 3 months. Then what to do? Pause. You pause the lecture. So it's always a good thing, no? So that you can participate. You find out the answer. How much is that? Well, I will continue the story, but you can always find out the suspense after you unpause me. Okay. So the calculation of this gives me 750. That's it. 750 आपने कमाया 3 महीने का इंटरेस्ट. ये कहाँ पे आना चाहिए? ये पहले तो फिक्स्ड डिपॉजिट में प्लस होना चाहिए. तो ये 30,000 के फिक्स्ड डिपॉजिट में 750 और बाहर टोटल आ जाएगा 3750. ये फर्स्ट इफेक्ट है 750 का. दूसरा, इट्स ऑल्सो योर इनकम ना, इट इज ऑल्सो योर कमाई, योर इनकम. तो इनकम साइड पे लिखो interest receivable on fixed deposit 750. It is a little like last time, but it is a little different also from last lecture. So it's always good, like I say, lecture के beginning में वो कार्ड दिया गया था, तो अगर आप उसे क्लिक करो तो आप प्रीवियस लेक्चर में चले जाओगे, तो ये लिंक आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन. क्या लास्ट ईयर का 1200 मिलना था, मिला? देखो ऐसा है, आपको मिला कितना? ऊपर देखो 52,000. 52,000 इतना बड़ा अमाउंट है, 1200 नहीं मिला रहेगा. यू मे हैव, नॉट जस्ट मे, पक्का आपने उसको याद दिलाया होगा, उसको इसको, सर आपका पैसे दे दो, आपके पैसे दे दो. सो इट इज एन अजम्पशन 52,000 if you have received. Definitely you have received 1200 because it's a very minor amount. It's not a big amount. It's a minor amount. So in 52,000 ऊपर उसके अंदर it is assumed that there is 1,200. Is it okay? No, it's not okay. वो last year का है. It should not be a part of 52,000. तो क्या करूँ मैं? उसको आप माइनस करो. लास्ट ईयर का कमाई आप माइनस करो 1,200. सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? यू हैव रिटन ना लास्ट ईयर का रिसीवेबल, ऊपर लिखा है, अभी वो रिसीव्ड हो गया, तो उसको माइनस करो 1,200. सो लास्ट ईयर का हिसाब क्लियर. बट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, इट फर्दर सेज दैट इन डिसम्बर 31st 2017 3,200 अभी तक मिलना है. 3,200 अभी तक मिलना है, रिसीवेबल. सो आई रिपीट, एवरी ईयर दिस स्टोरी कंटिन्यूस. किसी ने लास्ट ईयर नहीं दिया, ये साल में दे दिया, किसी ने ये साल में नहीं दिया, अगले साल में देगा. तो ये 3,200 रिसीवेबल है फॉर द करंट ईयर. इट इज करंट ईयर्स इनकम. यू मस्ट राइट इट इन द करंट ईयर. सो अबाउ एनी अदर ईयर माइनस करो, करंट ईयर का प्लस करो. 3,200. outer column will give 54,000. second effect of 3,200, it is receivable. asset में वो दिखना चाहिए, तो आई होप आपको दिख रहा है. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट ईयर का 3,200 in a very same manner, हम शक्ल मैनर इज लॉकर रेंट. तो आप वो भी देख लो. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 31st December 2017 250. कुछ लोगों ने, मेंबर्स ने, प्लेयर्स ने 250 रुपये का लॉकर रेंट दिया नहीं, नो प्रॉब्लम, हम उनका वो लॉक करके रखेगा और जब तक उन लोग देगा नहीं तब तक वो लॉकर खुलेगा ही नहीं. हाँ, सो मतलब इट इज़ रिसीवेबल. तो लॉकर रेंट में आप 250
ऐड करो, बाहर आएगा 1500. ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट, रिसीवेबल, जस्ट लाइक एनी अदर रिसीवेबल ऑन द एसेट साइड. सो एट द वेरी एंड, लाइक आई सेड, लिस्ट बहुत लंबा था. 250 ये था रिसीवेबल वाला आउटस्टैंडिंग. अभी है पेएबल वाला आउटस्टैंडिंग, बिकॉज द क्वेश्चन सेज कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना, ये मेरे पीछे है 1000. ओके, थोड़ा बाय गोइंग लेफ्ट एंड राइट, आई डोंट हैव टू गो टू दैट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड देन कम बैक. सैलरी में 1000 ऐड करो. तो चलिए करते हैं. हाँ, सो द टोटल इज 12,000. sum is not over because in the sum, well, उसका सेकेंड इफेक्ट देना है, वो बैलेंस शीट में हमको लिखना है लाइबिलिटी साइड, बिकॉज दिस इज पेएबल, दिस सैलरी इज पेएबल 1000. बाय मिस्टेक डोंट राइट 12,000, दैट वाज जस्ट द टोटल. क्वेश्चन कुछ और है. दे से ऑन 1 Jan क्लब के पास बिल्डिंग था, फर्नीचर था, स्पोर्ट्स मटेरियल था, वो सब हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. डेप्रीशिएट करो 10%, इंक्लूडिंग परचेस, मतलब जो नया खरीदा उसको भी डेप्रीशिएट करो. ओके ओके ओके. फर्स्ट क्या करो, 10% सबको, बट सबसे ऊपर बिल्डिंग, उसका 10% कर लो. 3600, आंसर आउटसाइड 32,400. दैट इज फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट क्या है ना, एक्सपेंस में it is a non-cash item, but in income and expenditure we entertain, we do write non-cash items. 3600. अगला आई थिंक फर्नीचर है, उसका भी 10%, तो 1970. देन आउटर कॉलम 17,730 एंड 1970 का सेकेंड इफेक्ट. फिर से एक्सपेंडिचर में चले जाओ, 1970. and lastly is sports equipment which had sale, purchase और अभी depreciation. 2730. outer column after subtraction 24,570. the second effect of that depreciation, like all the depreciation, is on the expenditure side. Then that's it, the question comes to an end with this. The solution does not. Why? Total करना है ना, surplus most probably आ जाएगा. So the credit total above me is 60,500 and the surplus, as in when you do your calculations, you can always pause. So I get frozen kind of, okay, and then you can unpause and then compare your surplus answer with what I get. So what I get is 26,300. This from here will go to the capital fund in the balance sheet and get added. Surplus का जो उल्टा है deficit, वो नहीं आया, आने वाले lectures में आ जाएगा. The answer is 140,590 and the total of the liability and the asset. पहले liability 149,090 and asset. Congratulations to whom? To you and to me. Okay, this is a very normal continuation from the previous lecture. I have tried to add something new and repeat multiple things from the previous one. So that is it for this particular solution. Please note, याद रखना टेलीग्राम चैनल के बारे में. चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको आज के क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा. आप ये चैनल, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया, देन माय रिक्वेस्ट इज प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, share it with your friends so that the news of this channel bringing lecture videos for CBSE HSC level can also go to others. If you have any doubts,
I would highly appreciate it अगर वो doubts आप comment में लिख दो. We'll do our best to answer those doubts either in the comment section if it is possible. If not, maybe in the next lecture. So that is it for me for the day. This is Steven sir. This is my goodbye. Please take care of yourself. Take care of your seniors and juniors, of everyone in your family, of your loved ones. Have a good day ahead. God bless. Bye for now.